राज्यत भयंकर गैंग रेपर घटना। हेलो गाइस, राउत सब किरको महान आशा करें राउत सब अच्छा है और स्वस्थ है। तो मैं भी अच्छा हूँ और ये वीडियो में आज राउत सब के सामने लेके आ हूँ मैं एक स्पष्ट दुनिया और बहुत जरूरी और बहुत दुख लगा कहानी, ताकि राउत सब ऐसा नहीं देखनो नहीं होगा, ताकि ऐसा घटना जिसको घटना घट के जाता है। आज मैं यह इन्फॉर्मेशन तक राउत सब के सामने आग बढ़ा के लिए कोशिश करूँ। सो इकर पहले मैं राउत सब के कुछ बात करे के लिए चाहूँ और कुछ ऐसा बोले के लिए चाहो, ठीक है। तो चला हमने आज जाना था ही नारी जितना महिला नारी जाति के ऊपर अत्याचार रेप गैंग रेप एरकम माने रेप किसमान देखे के लिए मिला थे। और इटा मैं कहाँ से मिला थे कहले माने प्राग न्यूज में जिटा हमने के महानगर गुवाहाटी में हो ही रहे एक दिन के आगे हो रहे। तो वह दृश्य के राउत के देखे के लिए देखा के लिए कोशिश करबो। दर्शक वीडियो में नया है तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर रखबा, ताकि दुई एक मानुष बाहर के देखे पाबेन और शेयर कर ले माने और सब जान पाबेन किसमान महिला, ठीक है। तो आज हमने के एरकम राख हो बा प्रोग्राम हो कि बा राती बिकार में महिला के किसमान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसमान गिला ठाक के लेगेन और वहाँ जाके हमके महिला गिला बुझ नहीं पाए और बुझ नहीं पाए के उ सब मन चल जाए ना, चल जो आगे पीछे ईमान के की है आहे की है नहीं लगे तो मन गम नहीं पाए के चल जाए जुआल पीछे ये जे किबा किबी घटना गिला हो जाए और उकर में बचा के लोग या क्यों नहीं खेन उटा टाइम में। सो वो खातिर सोच समझ के निकलवा घर से और ऐसा मानुष संगे निकलवा जाते अपन आदमी हो और अपन भाई बंधु हो ईमान सब संगे जाए लगे घर परिवार के साथ में जाए लगे। तो यह खातिर होशियार होए लगी जे नहीं तो यह में गिरे लोगिया हो विपद आपद में गिरे लोगिया हो। आजकल के दिन में प्राय ऐसा नहीं चलते है और देख पाते ही। तो हमने यह के कुछ दृश्य हमने न्यूज विषय में हमने देखने के लिए कोशिश करबो। देखते रहा वीडियो के शुरू से अंत तक। और चला तब मैं वीडियो के एखन आरम्भ करा था और देखने के लिए कोशिश करा था। दर्शक वीडियो के देखबा महानगर महानागरिकर মাজত ঘূৰি ফুৰিছে এছাম কামুক। বিকৃত মানসিকতা নৃশংসতাৰ প্ৰতীক এই কামুকখন। সাৱধান হওক প্ৰতিগৰাকী নাৰী। মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ নপাসন্দৰ। সাৱধান হওক নাৰী। মহানগৰৰ মহানাগৰিকৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিছে একাংশ কামুক, যাৰ বাবে নাৰী কেৱল ভোগৰ সামগ্ৰী। নিশাৰ অন্ধকাৰত মাতাল হৈ নপাসন্দই এগৰাকী মহিলাক প্ৰায়ে কৰিলে নিঃশেষ। হয়, গুৱাহাটী বৰাগাঁৱৰ কাণ্ডই এতিয়া জোকাৰিছে সভ্য সমাজক। নপাসন্দই মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি ভাইৰেল কৰিলে ভিডিঅ'। ধৰ্ষণকাৰীৰ মুখত বিকট হাস্য। মহিলাক উলংঘ কৰিলে আৰু কৰিলে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। আৰু গেং ৰেপৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইগৰাকী ৰবীন দাস। খবৰ অনুসৰি ৰবীন দাসে মহিলাগৰাকীক জালুকবাৰী উৰণ সেতুৰ সমীপৰ পৰা বৰাগাঁৱৰ নিজৰাপাৰৰ নিজ বাসগৃহলৈ আনিছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে 5 দিনৰ পূৰ্বেই বৰাগাঁৱৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপত নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ধৰ্ষণৰ কাণ্ড। দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিল এই তথ্য। ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ ভিত্তিতে গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰমে কুলদীপ নাথ, বিজয় ৰাভা, পিংকু দাস, গগন দাস, সৌৰভ বৰা, মৃণাল ৰভা, দীপাংকৰ মুখীয়া আৰু শেহতীয়াকৈ ৰবীন দাসক। 18-ৰ পৰা 23 বছৰ বয়সৰ যুৱক কেইজনৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ। প্ৰাপ্য তথ্য অনুসৰি ৰাস চাবলৈ মাতি আনি সংঘটিত কৰিছিল মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰা এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই জঘন্য ভিডিঅ'টো। পুনৰ এবাৰ মানৱৰূপী এনে নৃশংস মানুহৰ বাবে অসমীয়া সমাজ আজি আকৌ এবাৰ চৰ্চিত হৈছে। এই ভাইৰেল ভিডিঅ' ৰাষ্ট্ৰীয় অথবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চৰ্চিত হ'বলৈ বৰ বেছি সময় নাই। কাইলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে এই ঘটনাৰ লোকেশ্যন পাব অসম অথবা গুৱাহাটী বুলি। অসম আৰু অসমীয়াক বদনামী কৰা এই মানুহবোৰৰ চূড়ান্ত শাস্তিৰ দাবী কৰিছে এতিয়া সচেতন মহলে। এই ক্ষেত্ৰত জাত পাত ধৰ্মৰ কথা নাই। অপৰাধী অপৰাধী। অপরাধীর শাস্তি তাৎক্ষণিক হোক, যাতে মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় পাই
আৰু বেলেগ নাৰীও যাতে মহানগৰীত শংকাত নুভোগে এই দাবী কৰিছে এতিয়া সচেতন মহলে। এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতা কিদৰে হ'ব আৰু এইকেইগৰাকী পাখণ্ডৰ শাস্তি কি হ'ব তাকে চাবলৈ আগ্ৰহী এতিয়া সচেতন মহল। আৰু আছে খবৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।